तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया सेगमेंट दैट इज भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सम सॉर्ट ऑफ रेंज काइंड ऑफ स्लाइड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज भारतीय न्याय संहिता? सो भारतीय न्याय संहिता इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव framework designed to replace IPC of 1860, aiming to modernize and streamline India's criminal justice system। तो IPC के जो भी प्रोविजंस थे जो आउटडेटेड हो गए थे उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए वी हैव आवर न्यू संहिता और एक्ट दैट इज और कोड दैट इज नोन एज द भारतीय न्याय संहिता। ओके, it covers various aspects of criminal law, including definition of crimes, penalties, and procedural regulations, and reflects contemporary legal principles and societal values. IPC is the main criminal code of India, enacted in 1860 and came into effect on January 1, 1862. It lays down the laws and sets out the punishment for the crimes committed in India. And इसके मेन जो भी क्या बोलते हैं जिनका वाइटल रोल था वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले थे। ठीक है, he led a committee of legal experts who worked on drafting the code. The primary objective was to consolidate and standardize criminal law in India, which until then were based on a combination of। तो mainly क्या था कि IPC क्यों बना था? क्योंकि उस टाइम during the प्री इंडिपेंडेंस एरा हमारे कंट्री में अलग अलग लॉज चलते थे। हिंदू लॉ अलग, इस्लामिक लॉ अलग एंड कस्टमरी लॉज अलग। तो इन सब चीजों का एक कंपाइलेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और क्या बना? आईपीसी बना। ठीक है, अब आईपीसी अभी तक तो रेलेवेंट था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब कुछ प्रोविजंस हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। हालांकि उतने चेंजेस नहीं हुए हैं, बट यस देयर आर 10 मेजर चेंजेस जो हुए हैं हमारे बीएनएस में। तो वी विल सी, वी विल लुक आफ्टर दैट। और सबसे बड़ा चेंजेस तो क्या है? न्याय संहिता। अब हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? न्याय संहिता। दैट मीन्स जस्टिस डिलीवर करना अब हमारा मेन मोटो है। पहले क्या था? इंडियन पीनल कोड, जिसमें प्राइमरी गोल था हमें पनिशमेंट देना, प्राइमरी गोल था। तो पनिशमेंट से किधर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है? जस्टिस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बीएनएस? तो पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, जस्ट लाइक कि आईपीसी जैसा है पूरे ओवरऑल कंट्री में एप्लीकेबल था, बीएनएस इज आल्सो एप्लीकेबल टू ओवरऑल कंट्री इंडिया। जेंडर न्यूट्रल, देयर इज नो जेंडर बायसनेस की yes there are certain provisions for especially for women's children's, that is exception, but apart from this if somebody has committed murder then we will not see whether she is a female or he is a male. The act is gender neutral. Then accountability, IPC or BNS ensures that those who commit crimes are held accountable for their actions. It provides a framework for the investigation and prosecution of crimes. Prevention of crimes, the IPC also includes provisions to prevent crimes from being committed. It aims to deter, मतलब डर बैठाता है कि आपको ये क्राइम नहीं करना, अगर आप करोगे तो हम क्या इम्पोज करेंगे? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इम्पोज करेंगे। तो ये हमारे फीचर्स जो आप कह लो आईपीसी का हो या बीएनएस का हो, वही सेम है। Now from IPC to BNS. So on July 1, 2024, India enacted 3 new laws to replace its colonial era criminal laws, marking a significant shift in its criminal justice system. तो हमारे पास क्या क्या आया? BNS आया, BNSS आया और क्या आया? BSA आया। ठीक है, passed in December 2023, these new criminal laws aim to modernize the legal framework by addressing contemporary issues such as क्या-क्या contemporary issues हैं? Like organized crime, economic offenses, emphasizing identity and authenticity in light of technological advancement, introducing community service in as a form of punishment। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कम्युनिटी सर्विस क्या पहली बार हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो रहा है? तो नो, हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस जैसा पनिशमेंट था, बस उसको हम लोग इसमें भी बीएनएस में भी इम्प्लीकेट किए हैं। ठीक है, द न्याय सिग्निफाइज सोशल जस्टिस विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल को भी ध्यान में रखते हुए बीएनएस को फॉर्मुलेट किया गया टू मेंटेन सोशल जस्टिस। द प्रेजेंट बीएनएस ट्रांजिशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ यूनिटिव टू न्याय, पनिशमेंट से किसकी तरफ गया है? न्याय की तरफ गया है। एंड restrains the deterrence aspect, introducing provisions which focus on providing justice to all stakeholders. The aspect of न्याय is visible through the transition from retributive to reformative approach। ठीक है, retributive मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। एंड reformative क्या होता है? रिफॉर्म करना, कि अगर कोई व्यक्ति जेल में भी तो उसको कुछ ऐसे स्किल्स सिखा दो
कि जब वो जेल से बाहर निकले तो अपना दिनचर्या गुजार सके। द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन एंड कंसिडर्स क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. इट एक्नॉलेजेस द नीड फॉर अ शिफ्ट टुवर्ड प्रायोरिटाइजिंग द राइट्स ऑफ द विक्टिम्स. मतलब अब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं? फॉर प्रायोरिटाइजिंग द राइट्स ऑफ द विक्टिम्स रेदर देन फोकसिंग ऑन द एक्यूज्ड की पनिशमेंट देना, पनिशमेंट नो, हमको जस्टिस करना है. किसके साथ? विक्टिम के साथ हमको जस्टिस करना है. ओके. Now, what are the major changes in BNS? तो ये 10 major changes है. Community service, punishment for mob lynching, new offences of organized crime, petty organized crime, new offences of terrorist attack, change in punishment in hit and run cases, sedition अब punishable नहीं है, उसकी जगह पे treason जैसे provisions add किया गया है. 150 में करा गया है. mere possession of fake currency notes is no more punishable. Scope of offense of theft expanded to cover theft of intangible items like theft of data. Snatching is a new offense. So these are the petty new offenses which are added in BNS. Now the most important task of this lecture is to remember the range. So how many chapters are there? There are total 20 chapters and 358 sections are there. Okay, chapter 1 1 to 3, section 1 to 3, that is preliminary. 4 to 13 punishment. ये एकदम मगअप करने का है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, बस इसमें ट्रिक बना करके हम सेक्शंस को याद कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं है सच. तो 1 to 3 प्रिलिमिनरी, 4 to 13 पनिशमेंट, 14 to 44 जनरल एक्सेप्शंस, 45 to 62 अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट, 63 to 99 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, फिर अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट स्टेट, रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, रिलेटेड टू इलेक्शन, रिलेटेड टू कॉइन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स. Then offenses against public tranquility, public servant, contempt of lawful authority of public servant, 13 में दिया हुआ है ये. Then false evidence and offenses against public justice, offenses affecting public health, safety, convenience, decency and morals, offenses related to religion, property, then related to property marks, criminal intimidation and rebellion saving. तो इस चीज को पूरा मगअप करना है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, ऑफेंसेस, पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. सो आई होप सो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बहुत क्लियर हुआ होगा. इट इज वेरी शॉर्ट बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू मग अप इन दिस about the introductory part and the range of the BNS. So I hope so you have understood till here and thank you.